एनवायरमेंट बायोडाइवर्सिटी के लेक्चर है करंट अफेयर्स के ऊपर. सो वी हैव कवर्ड करंट अफेयर्स अप टू प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड. अब उसके आगे के जो करंट अफेयर हैं एनवायरमेंट बायोडाइवर्सिटी के अंदर, दैट्स व्हाट वी आर कंटिन्यूइंग विद टुडे. सेम डॉक्यूमेंट. सो ऑन यूट्यूब सम पीपल वर आस्किंग मी फॉर द डॉक्यूमेंट, लाइक, तो उनको बस व्हाट्सएप पे मैसेज करना है एंड द डॉक्यूमेंट विल बी मेड अवेलेबल एनी हाउ. सो क्लाइमेट फाइनेंस, लेट्स सी, दिस इज द टॉपिक व्हिच वी आर टू स्टार्ट विद टुडे. क्लाइमेट फाइनेंस को लेके बहुत देर से बात हो रही है ऑलरेडी. वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश ए ग्लोबल और ग्रीन क्लाइमेट फंड ऑफ समवेयर नियर $100 billion. और इतनी एनुअल फंडिंग चाहते हैं हम. जैसे अगर इंडिया के बारे में हमने फैक्ट पढ़ा था, तो 2070 का टारगेट अगर हमें अचीव करना है नेट जीरो का, तो उसके लिए $10 ट्रिलियन की फंडिंग चाहिए. तो वो फंडिंग कहाँ से आएगी? इंडिया में से तो आने से रही, हमें किसी बहुत सारी कंट्री से जनरेट करना पड़ेगा. और क्योटो प्रोटोकॉल इसके लिए मैकेनिज्म्स रखे हुए हैं, जिसमें एक कंट्री अगर चाहे तो डेवलपिंग कंट्री को हेल्प कर सकती है अपने कार्बन न्यूट्रल टारगेट्स को अचीव करने में, एंड बाय दैट वे दैट कंट्री कैन इटसेल्फ जनरेट कार्बन क्रेडिट्स फॉर इटसेल्फ. ओके, सो नाउ जो COP26 है, इससे पहले अभी शर्मल शेख वाला नहीं, जो पुराना था, इसके अंदर जो कमिटमेंट्स थी, दोबारा से टारगेट की बात की गई कि भाई $100 बिलियन आपने बात कहा था, तो इसका क्या हुआ? ओके, नाउ ही स्टेटेड दैट अ मैकेनिज्म इज बीइंग पुट इन प्लेस टू अचीव द टारगेट ऑफ द क्लाइमेट फाइनेंसिंग. एज ऑफ नाउ ये मैकेनिज्म का कोई हाईलाइट नहीं है, बट है. अब क्लाइमेट फाइनेंस के बेसिक्स क्या हैं जो प्रीलिम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं? लेट्स सी. So it refers to local, national and transnational financing. तो कहाँ से आ सकती है? कहीं से भी आ सकती है, ठीक है. Drawn from public, private and alternative sources of financing that seek to support mitigation and adaptation action that will address climate change. तो ये गवर्नमेंट के लेवल से भी आ सकती है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी दे सकते हैं. नेक्स्ट, the UNFCCC Kyoto Protocol and the Paris Agreement call for financial assistance from the parties with more financial resources. ये कौन सी डेवलप्ड कंट्रीज हैं? To those that are less endowed and more vulnerable, that is the developing countries. And this is in line with the principle that is common but differentiated responsibility and respective capabilities. थोड़ा सा उसमें एक ऐड कर दिया CBDR के अंदर, respective capabilities. Okay. In COP26, new financial pledges to support developing countries in achieving the global goal for adapting to the effects of climate change were made. अभी ये जो न्यू रूल्स हैं, अभी इनकी जो अडेप्टेशन है वो पेंडिंग है, ठीक है. नाउ व्हाट इज दिस ग्रीन फाइनेंसिंग? ये प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको मेंस में भी आ सकता है. तो जैसे आपने क्लाइमेट फाइनेंस देखा, वैसे ये भी है. इसके अंदर क्या है? टू असिस्ट द प्रोविजन ऑफ क्लाइमेट फाइनेंसिंग, UNFCCC established a financial framework to give financial resources to developing nation parties, and this is in agreement with Kyoto Protocol and Paris Agreement. Now, this financial mechanism operation can be entrusted to one or more existing international entities जो already हैं. For example, 1994 में हमारे पास एक global environment facility है, which has acted as financial mechanisms operating institution, and the parties established the Green Climate Fund at COP16 2010. ये already UPSC Prelims में पूछ चुका है. Okay. Other funds which are existing, so now they have established two funds. One is the Special Climate Change Fund and Least Developed Countries Fund, LDCF. Both are managed by the GEF, that is again your Green Global Environment Facility, and the Adaptation Fund established under the Kyoto Protocol. तो अलग अलग फंड्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं, उन्हीं को ये $100 बिलियन जो एनुअली जनरेट करने की बात की गई है, उसका चार्ज भी दिया जा सकता है. बस इतना ही अभी तक वर्कआउट है. तो प्रीलिम्स के एंगल से आपको ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी और ग्रीन क्लाइमेट फंड, ये दोनों पता होना चाहिए. COP16 के अंदर ये एस्टैब्लिश हुआ, ये पता होना चाहिए. ये दो चीजें याद रखनी, ठीक है. नेक्स्ट इज न्यू रामसर साइट्स. तो हमने इसके बारे में रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स पढ़ चुका है, और इसमें अभी हमारे पास करीब 54 के आसपास साइट्स चल रही हैं. जो साइट्स हैं आप ऑलरेडी पढ़ चुके. बस मेनली इसका क्राइटेरिया ध्यान में रखना है कि ऑन व्हाट क्राइटेरिया समथिंग कैन बी नेम्ड एज अ रामसर साइट प्रीलिम्स के अंदर. अब
apart from the sites itself जो आप पढ़ ली, ठीक है. So ये क्राइटेरिया वैसे तो स्टैटिक का पार्ट है, बट यहाँ पे गिवन है तो प्लीज गो थ्रू like a static reading for this also. So representative, rare, unique example of natural, near natural wetland आप ऑलरेडी बुक में पढ़ चुके हो. Now significance क्या है? The Ramsar tag helps develop and maintain an international network of wetlands. So how it helps? Financing, guidelines, management practices, research and assessment, scientific know-how, ये सारा चीजें वहां पे आती हैं. The sites are protected under strict guidelines of the convention. Next is the human-animal conflict. Now it refers to the struggle that arises to the presence of or behavior of wildlife poses actual or perceived direct recurring threats to human interest or need. कई बार फसल खराब कर देते हैं, कई बार घरों में घुस जाते हैं एनिमल, तो यहाँ पे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है. आमतौर पे इसके कारण क्या है? हैबिटेट लॉस सबसे बड़ा कारण है. हम उनके एरियाज में घर बना लेते हैं, इंडस्ट्री बना लेते हैं, तो फिर एनिमल को तो वहां पे आना ही. ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल, जैसे हमारी पॉपुलेशन 8 बिलियन पे पहुंच गई है, तो वाइल्ड एनिमल की भी तो बढ़ रही होगी. चेंजिंग क्रॉपिंग पैटर्न्स एंड दैट अट्रैक्ट वाइल्ड एनिमल्स टू फार्मलैंड्स. आमतौर पे wild animal would live in the forest, but since cropping pattern allows kind of a freely available food or food grain, so therefore farmland is an attractive destination for them also. Movement of wild animals from the forest areas to human dominated landscape for food and fodder, and movement of human beings to forests, sometimes illegal collection of forest produce. Then habitat degradation due to growth of invasive alien species, अब ये भी तो अपने आप में ट्रबल है. तो इनमें से कुछ भी कारण हो सकता है. अब ये प्रीलिम्स में भी चाहिए, मेंस में भी चाहिए कॉजेस. देन डेटा इसके बारे में मेंस के लिए ही चाहिए, प्रीलिम्स में रिक्वायरमेंट नहीं होगा. तो देयर वर अबाउट 222 एलिफेंट्स किल्ड बाय इलेक्ट्रोक्यूशन अक्रॉस द कंट्री बिटवीन 2018 to 21. तो दैट्स अ कॉज ऑफ ग्रेव कंसर्न. 29 tigers were killed by poaching. Yeah, 197 tiger deaths are under scrutiny. तो 2 साल के अंदर 29 टाइगर्स भी मरे. अब ये ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है. ओके, व्हाट इनिशिएटिव्स हैव बीन टेकन? फर्स्ट इज एम्पावरमेंट ऑफ ग्राम पंचायत. देन प्रोवाइड इंश्योरेंस. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्रॉप इंश्योरेंस ठीक से होना चाहिए. ऑगमेंटिंग फॉडर अवेलेबिलिटी. अगर उनको फॉडर सोर्सेस अपने आसपास जंगल में मिल जाएं, वाटर एंड वाटर सोर्सेस विद इन फॉरेस्ट एरिया, तो फिर बाहर जाके किसान की फसल खराब करने की जरूरत नहीं. टेक प्रोएक्टिव मेजर्स सच एज अर्ली वार्निंग सिस्टम, क्रिएशन ऑफ बैरियर्स, डेडिकेटेड सर्कल वाइज कंट्रोल रूम्स. तो बेसिकली इससे फायदा ये होगा कि नेचुरल बैरियर्स क्रिएट हो जाएंगे, एनिमल जाएगा नहीं ह्यूमन डोमिनेटेड एरिया में. Provide instant relief, so payment of the portion of ex gratia as interim relief within 24 hours of the incident to the victim or family. कई बार होता है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में ह्यूमन बीइंग सफर्स, सो इमीडिएट रिलीफ होना चाहिए, ऐसे नहीं कि फिर तुम कोर्ट के चक्कर लगा रहे हो. So this is what the advisory has come from the management of human wildlife contact. Okay, and there is a standing committee which issued this advisory within the National Board of Wildlife, NBWL. तो ये मेंस के लिए ये वाले सारे एस्पेक्ट्स आपको चाहिए. ठीक है, प्रीलिम्स के लिए जो कॉजेस हैं, इस वजह से ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, तो सीधा इसमें 1 2 3 4 करके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है. ओके, मूविंग ऑन. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. अब हमने वेस्ट मैनेजमेंट बहुत डिटेल में पढ़ लिया, तो इसमें से करंट एस्पेक्ट क्या है, सिर्फ उस पर ध्यान देना है. ठीक है. नाउ with the burgeoning pollution and even faster urbanization, there has been an explosion in the generation of municipal solid waste in India. हमने पढ़ा था कि जितना वेस्ट जनरेट होता है सॉलिड वेस्ट, उसमें से 70% के आसपास कलेक्ट हो रहा है अर्बन इंडिया में. उस 70% में से जो प्रोसेस होता है आगे, वो मुश्किल से 15-20% हो पाता है. 50% हम उसको भी ढंग से प्रोसेस नहीं कर पाते. Now, it is important to note that the engagement of formal waste management system remains low in the cities. Hence, in many developing countries, including India,
waste collection and material recycling are majorly performed by informal waste sector. घर में जो कूड़े वाला आता है वो इनफॉर्मल वेस्ट सेक्टर का पार्ट एंड पार्सल है. सो इसकी वजह से क्या है कि जो रिसाइक्लेबल मटेरियल है वो भी ठीक से सर्कुलर इकोनॉमी का पार्ट बन नहीं पाता. अभी इंडिया का प्रेजेंट स्टेटस है क्या देखिए. दिस इज समथिंग दैट यू विल यूज फॉर मीन्स मोर देन प्रीलिम्स. सो अर्बन इंडिया जनरेट्स 0.15 million tons per day of municipal solid waste. That is 62 million tons of waste which are generated annually. Then out of which 5.6 million ton is plastic waste. Apart from that, there is hazardous waste, there is biomedical waste, and so on. The volume of waste is projected to reach about 165 million tons annually by 2031, and so on. बढ़ता जाएगा जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, जैसे जैसे कंज्यूमरिज्म बढ़ेगा, वैसे वैसे वेस्ट बढ़ता जाएगा. ठीक है. कारण क्या है? इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, हाइपर कंज्यूमरिज्म. Then organic farming and composting are not economically attractive. अपने आप में ये कारण नहीं है, लेकिन ये हम अडेप्ट नहीं कर पा रहे. Chemical pesticide are heavily subsidized. Lack of financial resources with municipal corporations. Poor collection transportation. जो आपने स्टैटिक में पढ़े थे क्लास के अंदर, वही यहाँ पे भी है. अभी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 वाले जो चल रहे हैं, उसमें 3 तरह से वेस्ट की सेग्रीगेशन की बात होती है: वेट, ड्राई एंड डोमेस्टिक हजार्डस. ठीक है. इसके अंदर जो एग्जांपल्स हैं वो आपने याद रखनी है. नाउ वेस्ट जनरेटर्स विल हैव टू पे अ यूजर फी टू वेस्ट कलेक्टर्स. तो आपके घर से जो भी बंदा कूड़ा लेके जाता है वो पैसे तो लेते ही. देन देयर इज अ स्पॉट फाइन फॉर लिटरिंग एंड नॉन सेग्रीगेशन. तो कई बार आपको जो कूड़ा लेके जाता है घर से वो बोलता होगा, सर ये अलग अलग सेग्रीगेट करके दो. वेट एंड ड्राई एटलीस्ट वो बोलते हैं. ठीक है. वेट एंड ड्राई वेस्ट अलग अलग सेग्रीगेट करके दो. तो अगर नहीं करके देंगे तो आपको स्पॉट फाइन करने का उसको अधिकार है. वो करे ना करे वो उसके ऊपर है. Then used sanitary waste like diapers, sanitary pads should be wrapped securely in pouches provided by manufacturers or brand owners. So वैसे ऐसे कोई pouches आते नहीं, आपको भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ. ठीक है. Then the concept of partnership in Swachh Bharat has been introduced. Bulk and institutional generators, market associations, event organizers, hotels, restaurants, they are directly responsible for segregation and sorting. तो इनको स्वच्छ भारत अभियान के अंदर पार्टनरशिप में काम करना होता है. जो फाइनल सेग्रीगेटर है या फाइनल उस चीज को डिस्पोज करने वाली अथॉरिटी है या फिर म्यूनिसिपैलिटी है लोकल, उन सबसे कोऑर्डिनेशन में इनको ये इवेंट्स करने पड़ते हैं. All manufacturers of disposable products such as tin, glass, plastic packaging, etc., or brand owners who introduce such products in the market shall provide necessary financial assistance to local authorities for establishment of a waste management system. Then, the biodegradable waste should be processed, treated, and disposed through composting or biomethanation within the premises as far as possible. ये वाले जो रूल्स हैं ना, इनको एक बार बस रीडिंग लेना है, अपने आप याद रह जाएंगे. वहां पे पेपर में कोई टेंशन नहीं होगा. क्योंकि अगर आपको लेट्स से ये पूछ लिया जाए कि भाई जो वेस्ट है सेग्रीगेट किन स्ट्रीम्स में करनी होती है, या फिर दूसरा इसमें से क्वेश्चन क्या क्रिएट हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है. तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. अब गवर्नमेंट ने इसको लेके क्या क्या इनिशिएटिव किया, दैट इज द करंट पार्ट. तो प्रीलिम्स में इसमें आने के क्वेश्चन ज्यादा चांस है. देखिए, फर्स्ट इज वेस्ट टू वेल्थ पोर्टल. तो इंडिया में देयर इज अ वेस्ट टू वेल्थ मिशन. So this is one of the 9 scientific missions of the Prime Minister's Science and Technology Innovation Advisory Council. क्या करना चाहते हैं? ये ऐसी वेस्ट को आइडेंटिफाई करके ट्रीट करना चाहते हैं जिससे कुछ मटेरियल रिसाइकल हो जाए या कुछ वैल्यूएबल रिसोर्स एक्सट्रैक्ट हो जाए. Essentially that is the waste to wealth portal. Then there is National Water Mission. This is essentially for conservation of water, minimizing wastage. Then there is waste to energy. तो यहाँ पे आप वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स लगाते हो जहाँ पे उनको इंसिनरेशन चेम्बर्स के थ्रू जला के फिर उसके बाद एनर्जी प्रोडक्शन हो सकता है. देन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, सो एज टू मिनिमाइज द जनरेशन ऑफ प्लास्टिक, प्रिवेंट लिटरिंग और सिंगल यूज प्लास्टिक इंडिया में ऑलरेडी हमने बंद कर दिया. जुलाई 2022 में नोटिफिकेशन आ गया था. दैट्स दैट. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल टाइगर डे. तो बस सिंपली एक डेट याद रखनी है, 29 जुलाई. ठीक है. और अभी इंडिया में इसको कैसे वर्कआउट किया देखिए.
It was established in 2010 at St. Petersburg Tiger Summit in Russia. The Manas Tiger Reserve in Assam has 2.4 tigers for every tiger. The annual wildlife monitoring results of the Trans-Boundary Wildlife Preserve has revealed. So as it is, Manas Tiger Reserve के अंदर tiger population अभी अच्छे से बढ़ रही है. That's one thing in news. ठीक है. तो याद रखने वाली बात क्या है? 29 जुलाई टाइगर समिट रशिया, इंटरनेशनल टाइगर डे. दैट्स इट. ठीक है. नेक्स्ट इज क्लीन हेल्दी एनवायरनमेंट एज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट. अभी एक मूवमेंट फॉर क्लीन एयर भी चल रहा है. जैसे आप दिल्ली में भी नोटिस कर रहे हो, न्यूज के अंदर आ रहा है. नवंबर अक्टूबर एंड में आना शुरू होता है, पूरा नवंबर न्यूज में रहता है, दिसंबर में न्यूज से बाहर चला जाता है क्योंकि तब ट्रबल भी नहीं होता. दिसंबर में इट इज सॉर्टेड. वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस स्टार्ट, हवा के साथ साथ फिर निकल जाता है आगे धुआं. अभी ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहेगा ये पूरा महीना नवंबर के अंदर. लेट्स सी. So the UN declares access to clean, healthy environment as a universal human right. India voted for the resolution and pointed out that the resolution do not create binding obligations. हमने ये तो कहा कि ठीक है, क्लीन हेल्दी एनवायरनमेंट सबके लिए राइट है, पर हमने ये भी कहा कि भाई जो रेजोल्यूशन हम पास कर रहे हैं इससे आप इंडिया के ऊपर कोई बाइंडिंग ऑब्लिगेशन नहीं क्रिएट कर सकते कि हमें कोई पर्टिकुलर लॉ या पर्टिकुलर फाइन्स के हिसाब से चलना पड़ेगा. ओके. Every person on the planet has the right to live in a clean, healthy environment. Climate change and environmental degradation are the most critical threats awaiting humanity in the future. And it demonstrates that the member states can unite in collective fight against the triple planetary crisis of climate change, biodiversity loss, and pollution. So these are the troubles. लेकिन साथ ही साथ बस we are focused upon it is not legally binding. ये बार बार कहा है हमने. Russia and Iran have abstained from voting. You know, both of them are not right now working at par with the international scene. रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एंड ईरान यूएस. ईरान के अंदर जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट को लेके काम चल रहा है तो उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है. ठीक है. देन एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट. नाउ स्टैटिक पार्ट हम सबने पढ़ रखा है और यहाँ पे भी वो गिवन है. प्रेजेंटली इसमें हुआ क्या नया, बस वो ध्यान में रखें. So Ministry of Environment, Forest and Climate Change has notified amendments to the EIA rules, making several exemptions to gaining environmental clearance. सुप्रीम कोर्ट ने अब ये भी कह दिया कि भाई तुम environment clearance प्रोजेक्ट लगने के बाद ले सकते हो, है ना. तो इस वजह से थोड़ी सी exemptions प्रोवाइड करना जरूरी भी था. अभी इसमें exemptions हैं क्या जो रिसेंट दी गई हैं 2022 में. देखिए, फर्स्ट इज फॉर स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस प्रोजेक्ट्स. So it exempts highway projects of strategic and defense importance, which are 100 km from the LOC, among other locations, from an environmental clearance before construction. कई बार रोड्स बनानी जरूरी होती है ना बॉर्डर एरिया के आसपास, तो उधर आप पहले रोड बना लो, बाद में एनवायरमेंटल इम्पैक्ट आएगा तो आएगा, नहीं तो कोई टेंशन नहीं, क्लियरेंस नहीं चाहिए. The exemption to be accorded to the highways for strategic importance does away with the need for glean clearance of construction of the controversial चार धाम प्रोजेक्ट. मेनली ये जिसको फ्री कर रहा है वो चार धाम प्रोजेक्ट है. इसमें 900 किलोमीटर के आसपास सड़क बननी है और सारा इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है उत्तराखंड के अंदर. ठीक है. केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री एंड गंगोत्री, ये चार धामों की बात हो रही है यहाँ पे. प्रीलिम्स के अंदर चार धाम कौन से ये भी याद रखना. और ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की इनको अब जरूरत नहीं है अगर बॉर्डर एरिया के आसपास बनाएंगे या फिर स्ट्रेटेजिक या डिफेंस के इंपॉर्टेंस से बनाएंगे, तो इसको इन्होंने इस कैटेगरी में रख दिया. ठीक है. देन बायोमास बेस्ड पावर प्लांट्स. तो अगर 15 मेगावाट तक का आप कोई ऐसा बायोमास बेस्ड पावर प्लांट बनाना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस की जरूरत नहीं है. ठीक है. So it should be based on biomass or non-hazardous municipal waste using the auxiliary fuels such as coal, lignite, petroleum. Up to 15% has also been exempted. Next is port and harbors dealing in fish. So fish handling ports and harbors with less pollution potential compared to other and cater to small fishermen are exempted. कई बार छोटे छोटे लोकल पोर्ट्स होते हैं विलेज लेवल पे, उसमें छूट दी गई है. देन टोल प्लाजास. कहीं पे भी आप टोल प्लाजा इंस्टॉलेशन कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, बनाइए उसको, तो
no trouble there also. तो ये याद रखना है कि सीधा क्वेश्चन बनेगा प्रीलिम्स में, which of the following do not need environmental clearance as per the environmental impact assessment rules recently in use. So strategic and defense projects, biomass projects, port and harbor, small dealing in fish, and toll plazas. Okay. Next is, what is the environmental impact assessment? This is the static part, तो यहीं पे given है, दोबारा से आप पढ़ना चाहें यहाँ से पढ़ सकते हैं. Next is goal 2.0. What is this? So Ministry of Tribal Affairs and Meta, that is Facebook parent company, have launched the second phase of Goal Program 2.0. What is this? It is going online as leaders. 2020 में जब लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम पे इसको लॉन्च किया गया था एंड इट वाज कंप्लीटेड इन दिसंबर 2021. करना क्या चाहते हैं? Digital empowerment of tribal youth and women through the concept of mentor and mentee. Okay. The program is fully funded by Meta and the training will provided to 3 pillars, let's say, communication and life skills, enabling digital presence, leadership and entrepreneurship. So Facebook की तरफ से ये training exercise दी गई थी. Then, what do we know about this particular thing? So Goal 2 program will be open to all people from tribal communities. ठीक है, शुरुआती दौर में 1 mentor and 2 mentee that way. Objective क्या करना चाहते हैं इससे? Skill enhancement करना चाहते हैं, essentially digitally enable करना चाहते हैं via Facebook live sessions and Meta Business Coach, a digital learning tool. तो ये वैसे भी सबके लिए available ही है अगर आप देखेंगे तो. There were special focus on more than 10 lakh members of 50,000 Vandhan self-help group. कई बार इतना सा प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा, Vandhan self-help group has been recently seen in news for which of the following? इस कारण से न्यूज में रहा. तो यहाँ पे मेटा गोल 2.0, अपस्किलिंग ऑफ ट्राइबल यूथ, इस तरह से क्वेश्चन का आंसर बन सकता है. So they will be digitally trained with regard to market demand, packaging, branding and marketing of their products. So this will enable maximum participation and percolation of benefits of training within the tribal youth with the provision of a chatbot that basically is an IVR need-based on online sessions from industry experts in different fields as per requirement of the mentees. तो ये अच्छा प्रोग्राम है. इसमें basically आप, let's say, I'll give you one actual real story. So there was a girl from Manipur. She started a chocolate manufacturing during lockdown from her own home. And she got training online, Ministry of Tribal Affairs के साथ associate करके, किसी एक NGO से partnership करके, तो उसको करीब 5 लाख का लोन दिया गया. और वो 5 लाख के लोन के साथ साथ 5 लाख वैसे उसको दिया गया as a like a initiation seed money बिना किसी लोन की तरफ से. तो उसके बेसिस पे she was able to open up, she was able to sell branded chocolates here and there, अपना खुद का ब्रांड क्रिएट करके एक्सपोर्ट भी कर पा रही है, इंडिया में भी सेल कर पा रही है. तो दैट वे वो बहुत सारे लोगों के पास काम करने के लिए जज्बा होता है, काम करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं होता कैसे करें, या ये नहीं पता होता फंड्स कैसे एक्सेस करें. सो उसके लिए उनको बेसिकली मेंटरशिप की जरूरत पड़ती है. वहां पे ये प्रोग्राम काम आता है. ठीक है. व्हाट आर द एजेंसीज इन्वॉल्व्ड? फर्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, व्हिच इज इन कोऑर्डिनेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, will provide 6 digital classes in each of 175 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स. ये ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में एस्टैब्लिश किए गए हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा बजट के सेशन के अंदर रखे गए थे और एकलव्य मॉडल उसी में चल रहा है. The project is being implemented by the Education Research Network. Now this is again autonomous organization within the Ministry of Electronic and Information Technology. So that's that. अब इसमें एजेंसीज इन्वॉल्व याद रखें. विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज आर इन्वॉल्व इन गोल 2.0? ऐसे सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है. या ये किस मिनिस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेटेड है? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स मेन है, साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है. ठीक है. अदर इनिशिएटिव्स फॉर स्किल डेवलपमेंट, जस्ट अ रोस्टर, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ई स्किल इंडिया पोर्टल, समग्र शिक्षा, ये सब स्किल डेवलपमेंट के लिए. तो पुरानी स्कीम्स हैं, इनकी एक रीडिंग लेना चाहो तो गिवन है. नेक्स्ट इज डिजिटल बैंक्स. वैसे तो ये इकोनॉमी में होना चाहिए, बट अभी क्या है कि इन्वायरमेंटली फ्रेंडली भी हैं डिजिटल बैंक्स, तो ये यहाँ पे पहुंचा हुआ.
So recently, NITI Aayog has released the report titled "Digital Banks: A Proposal for Licensing and Regulatory Regime in India." So it suggested setting up of digital banks and licensing regulatory framework for such banks. हो गए अब तो established, बहुत सारे 75 के आसपास किए. Okay, करना क्या चाहते हैं इसके अंदर हम? So India has made a rapid stride in financial inclusion, and that's based upon JAM Trinity, जनधन आधार मोबाइल. ठीक है, उसी के बेसिस पे अब ये चल रहा है, और डिजिटल बैंक्स भी इसी के लाइन में चलेंगे. ठीक है, सो यूपीआई, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इन सब के चलते अब डिजिटल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी टू एन एक्सटेंट हमारे पास है. अब हम अलग से कुछ करना चाहते थे, तो इसलिए ये आया. सो इट विल बी डिफाइंड इन द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, उसमें डाल देंगे, and shall have its own balance sheet and legal existence. It will be different from the 75 digital banking units announced by the finance minister in Union Budget 2022-23. A DBU is a specialized fixed point business unit or hub housing certain minimum digital infrastructure for delivering digital banking products and services. So that is a DBU. यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं? This will be subject to prudential and liquidity norms on par with existing commercial banks. मतलब उनको जो CRR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, सब कुछ, और वो वही रिवर रेशियोज एंड रेपोस, वो सब हैंडल करना पड़ेगा. देन नीड क्या है, क्यों डिजिटल बैंक्स खुलने चाहिए? फर्स्ट इज क्रेडिट गैप. जो बोरोअर्स हैं उनको सफिशिएंट क्रेडिट अभी नहीं मिल रहा, या वो टेक्नोलॉजी बेस्ड अब क्रेडिट एक्सेस ज्यादा कर पाएंगे इसके बेसिस पे. दूसरा, reliance on digital channels. So most of the banks are having their own fintech providers, financial technology solution providers, and now more companies can offer loans and so on through digital solutions. Neo bank model faces challenge. So इसमें क्या है कि let's say neo banks are those who don't have a bank license and of their own, but count on the bank partners to provide bank license services. For example, Paytm, it does not have a bank license of its own, but will tie up with somebody else, some other bank like IndusLand or so on. तो उनके थ्रू ये अपनी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे. तो इस मॉडल में रेवेन्यू जनरेशन और वायबिलिटी की हमेशा ट्रबल रहती है, क्योंकि उतना पैसा नहीं आ पाता. अकाउंट खोलने को तो कोई भी खोल लेगा, लेकिन आपको मेंटेन करने में खर्चा आएगा. लेकिन अगर उस अकाउंट में सफिशिएंट ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही, तो फिर आपका कोई फायदा नहीं है, नुकसान. So next is government panel on MSP and natural farming. अभी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एग्रीकल्चर, नेचुरल फार्मिंग, ये सारी चीजें जो हैं इकोनॉमी का ही पार्ट है डेफिनेटली, बट थोड़ा सा नेचुरल फार्मिंग की वजह से ये टॉपिक एनवायरनमेंट के अंदर भी कोरिलेट होता है. एनी हाउ, आपके मेंस में ये जीएस पेपर 3 में है सारा कुछ. सो अभी यूनियन गवर्नमेंट हैड सेट अप अ कमिटी हेडेड बाय फॉर्मर यूनियन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी to look further into the issues of MSP and natural farming. MSP के बारे में सबको पता है, सबने स्टैटिक में पढ़ रखा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस. 3 फार्म लॉस के बारे में सबने सुना है, किसान आंदोलन के बारे में सबने सुना है. ठीक है, और फार्म लॉस हट गई, ये भी सबको मालूम है. अभी नेचुरल फार्मिंग क्या होता है, थोड़ा सा वो देख लेते हैं. MSP and all things we will be considering in economy. So this would give suggestions for programs and schemes for value chain development protocol validation and research for future needs. Also, push for area expansion under Indian natural farming system. हमने नेचुरल फार्मिंग के बारे में ये पढ़ा था कि एक होती है ऑर्गेनिक, जिसमें आप केमिकल पेस्टिसाइड्स या इंटरवेंशन की जगह ऑर्गेनिक इंटरवेंशन करते हो. नेचुरल फार्मिंग हैज नो इंटरवेंशन एट ऑल, हमने ये तो पढ़ा ही. ठीक है ना? तो उसमें जैसा आमतौर पे नेचर में फसलें पैदा होती, उसी तरह से यहाँ पे भी होंगी. दैट्स द वे नेचुरल फार्मिंग इज बाउंड टू बी. तो बेसिक डेफिनेशन पे ध्यान देना. अभी बस एक कमेटी सेटअप किया है इसके ऊपर, और कुछ नहीं. लेकिन इस कमेटी के पीछे विचार क्या है? अब सबसे बड़ा डर जो था किसान आंदोलन के टाइम पे, वो ये था कि एमएसपी चला ना जाए. गवर्नमेंट ने एक बार तो बोल दिया ठीक है एमएसपी चलेगा अभी, लेकिन लिखित में नहीं दिया कि हमेशा चलता रहेगा. ठीक है, तो एमएसपी से एज इट इज फायदा भी 3 स्टेट्स में ही मेनली होता है, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी. इसके अलावा बाकी स्टेट्स के अंदर एमएसपी में इतनी ज्यादा ऑफटेक ग्रेन की नहीं होती, क्योंकि जो एफसीआई को एक बफर मेंटेन करने के लिए ग्रेन चाहिए, वो इन 3 स्टेट से पूरा हो जाता है. तो इस वजह से हमें इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती.
बाकी जगह पे तो वैसे ही ज्यादातर प्राइवेट मार्केटर्स हैं जो ग्रेन उठाते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अब इसका 3 स्टेट्स की वजह से एमएसपी सिस्टम मेंटेन होना चाहिए या नहीं, क्या ये गवर्नमेंट बेस्ड बफर्स होने चाहिए या नहीं, इन चीजों के ऊपर और विचार करने की जरूरत है। नाउ इंडिया टॉप रेमिटेंस रेसिपिएंट, ये हमेशा रहता है न्यूज में फॉर वन और द अदर रीजन। इंडिया इज नंबर 1 बिकॉज हमारे यहाँ से जो एनआरआईज हैं, जो माइग्रेंट्स हैं, वो हमेशा घर में पैसे भेजते रहते हैं वापस, तो उसकी वजह से रेमिटेंसेस बढ़ती रहती है। 2021 में दिस वाज अबाउट $87 बिलियन। ओके, अब आपने यहाँ पे रिपोर्ट का नाम याद रखना है, बस WHO की रिपोर्ट है, रिपोर्ट ऑन हेल्थ ऑफ रेफ्यूजीज एंड माइग्रेंट्स, ठीक है, बस दैट्स इट। बाकी चीजें मीन्स के लिए ज्यादा हैं। माइग्रेशन के कंसर्न यहाँ पे क्या है, सो इट इज स्टेट्स दैट ग्लोबली about 1 in 8 people are migrants, okay? And from 1990 to 2020, total number of international migrants increased to about 281 million. As of 2020, Europe and North America hosted greatest number of international migrants, followed by Northern Africa and Western Asia. More than half of newly recognized refugees during the first half of 2021 were from 5 countries. ये 5 कंट्रीज में हालात भी सबसे ज्यादा खराब है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सुडान, सीरियन अरब रिपब्लिक, सीरिया, अफगानिस्तान एंड नाइजीरिया। अभी ये 5 कंट्रीज के हालात खराब होने की वजह से बेचारे इनके रेजिडेंट्स छोड़ छोड़ के अपना देश जा रहे हैं। Okay, as far as top 5 remittance recipients are concerned, India is always number 1 for last so many years now, ठीक है। दूसरे नंबर पे चाइना है, काफी फर्क है, फिर मेक्सिको है, फिर फिलीपींस है। जस्ट रिमेंबर इंडिया, चाइना, मेक्सिको, दैट्स इट। एज अ share of GDP, the top 5 remittance recipient were smaller economies. So Tonga is a country जहाँ पे 44% of GDP is on the basis of this remittance only. Okay. खैर ये वाला फैक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ टोंगा याद रखना, ठीक है। टोंगा, लेबनान, किर्गिस्तान, छोटी छोटी कंट्रीज हैं। Then in most of the other areas, remittances have also recovered strongly, registering 5 to 10% in Europe, Central Asia, Middle East, and so on. So that's not much of our concern. Okay. Now, what do we know about these remittances? It is basically the money sent to another party, usually one in another country. Sender is typically an immigrant, and the recipient is somebody back at home, parents, whomsoever. So remittance represents one of the largest source of income for people in low-income developing nations. So एक तरह से ये it often exceeds the amount of direct investment and official development assistance. तो अपने परिवार वालों को जो पैसा आता है उसी के बेसिस पे पंजाब के अंदर लाइफस्टाइल लोगों का अच्छा है। So India is the world's biggest recipient, and remittance bolsters the India's foreign exchange reserves and help fund its current account deficit. तो हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उससे बेटर हो जाता है, क्योंकि एज इट इज डॉलर्स में आने और आगे रुपी कन्वर्ट होके जाने। ओके, इमिग्रेशन के नेगेटिव माइग्रेशन के नेगेटिव इफेक्ट क्या हैं? फर्स्ट इज ब्रेन ड्रेन, सेकंड इज लेफ्ट बिहाइंड फैमिलीज, देन डिस्क्रिमिनेशन एंड xenophobia, देन पीपल स्मगलिंग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अभी भी बहुत सारे लोग रशिया से मेक्सिको और फिर मेक्सिको से यूएसए में एंट्री मारते हैं। ऐसे रूट्स के थ्रू लोग यूएस जाने की कोशिश करते हैं पंजाब से, और उसमें 50 लाख 60 लाख ऐसे अमाउंट्स इन्वॉल्व है। अब वो अपने आप में डेंजरस भी है। खैर, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद तो ये बंद हो गया चैनल, पहले ये चैनल बहुत चलता था और एक दो मूवीज भी है वो इसको कवर करती हैं। खैर, नेक्स्ट इज फॉरेस्ट फायर्स, कमिंग बैक टू एनवायरमेंट बायोडाइवर्सिटी कंसर्न्स। सो फॉरेस्ट फायर्स हैव ravaged यूरोप, स्पेशली दी साउथ वेस्ट यूरोप। जो हमने इससे पहले यूरोप के अंदर हीट वेव के बारे में पढ़ा था, उसमें भी फॉरेस्ट फायर्स के लिए डेंजर मैपिंग हमने देखी थी। Now, there were blazing heat waves destroying thousands of acres of land, forcing people to leave their home and killing several emergency personnel. How are forest fires classified? ये prelims के लिए required है। पहला है surface fire, दूसरा underground fire, तीसरा ground fire। अब surface और ground दोनों अलग अलग है। सरफेस फायर किसको बोलते हैं? तो
this may burn primarily as surface or surface fire, spreading along the ground as the surface litter, twigs, leaves, etc., dry grass, उसकी burning हो रही है on the forest floor and is engulfed by spreading flames. तो नीचे नीचे जमीन पे चल रहा है surface fire, ठीक है. Underground fire, low intensity, consuming the organic matter beneath and the surface litter of the forest floor are subgrouped as underground fire. ठीक है. Ground fire क्या है? So these fires are fires in the subsurface organic fuels such as duff layer under the forest stands, Arctic tundra or taiga or organic soils or swamps or bogs. This fire burns the root and other material beneath the surface that burns the herbaceous growth of the forest floor. ये फॉरेस्ट फायर्स के ऊपर अगर आपको ध्यान हो तो यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ रहा है कहाँ पे हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, तो इनकी टाइपोलॉजी भी याद रखनी, ठीक है, प्रीलिम्स के एंगल से. Then लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स 2011 ये पैकेज्ड कमोडिटीज के लिए. आजकल आपने नोटिस किया हुआ नॉन स्टैंडर्डाइज्ड पैकेजेस आते हैं, समथिंग लाइक 350 ml 230 ml ऐसी पैकेजिंग्स भी आती हैं. तो उसका क्या कंसर्न है? तो लेट्स सी. So Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution amended the legal metrology packaging commodity rules 2011 for ease of doing business and reducing compliance burden for electronic industry. So specifically for electronic industry है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना. Earlier Rule 5 was omitted to safeguard the interest of consumers. क्या amendments हैं? It allows the electronic products to declare certain mandatory declaration through QR code for a period of 1 year if not declared in the package itself. कई बार ना पैकेजिंग के ऊपर इतनी जगह ही नहीं बचती कि जो नए रूल्स हैं उसके हिसाब से कुछ राइटिंग की जा सके. तो 1 साल का टाइम दिया गया कि भाई एक QR कोड दे दो, वहां पे उसको स्कैन करके कोई पढ़ ले, कोई और इंस्ट्रक्शन चाहिए तो, ठीक है. But the industry, however, will have to declare on the package itself the mandatory details like MRP, phone number, email address. ये 3 चीजें जरूर होनी चाहिए. Earlier, all pre-packaged commodities, including electronic products, are required to declare all mandatory declarations as per legal metrology on the package. सब कुछ on the package होना चाहिए. जैसे आप फोन खरीदने जाते हो ना, सब कुछ बैक एंड में लिखा होता है. लेकिन now this can be reduced. Let me see if I have a package and I can show you what they mean by this. So here it is. So this is the packaging for Apple Pencil. If it is visible. Yeah. अभी बहुत छोटा दिखेगा, रुको. Here. So now on this package, if you see, Apple is responsible to list whatever it is needed to be listed. तो कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है ना, कुछ यहाँ पे गिवन है. फिर एक फाइनली एक लाइन लिख देते हैं कि भाई ज्यादा टेंशन है तो जाके इस वेबसाइट पे चेक कर लो. लेकिन ऑफ कोर्स सीरियल नंबर, वेयर इट इज मैन्युफैक्चर्ड, सर्टेन फोन नंबर्स, ऑल दीज थिंग्स आर प्रोवाइडेड इन दिस पैकेजिंग, ठीक है. तो इतनी डिटेल जरूर देंगे. चलिए वापस चलते हैं. बाकी आपके पास कोई ना कोई पैकेजिंग होगी, उठा के देखिए. फाइन. Now, what are the legal or metrology packaging rules? So it regulates the pre-packaged commodities in India. And essentially, why do we want them regulated? There is a trust factor. जब आप कुछ open commodity लेते हैं कि ठीक है ये खुली चीज मार्केट से उठाई, ले ली, यूज कर ली, अब उसके अंदर ना एक ट्रस्ट फैक्टर हमेशा मिसिंग रहता है. लेकिन जब हम पैकेज्ड कमोडिटी लेते हैं ट्रस्ट फैक्टर के बेसिस पे लेते हैं. ठीक है, एक ब्रांड नेम है और अगर हम उसकी पैकेज्ड चीजें ले रहे हैं तो उसमें कुछ स्टैंडर्डाइजेशन होगा. फॉर एग्जांपल लेट्स से फ्रोजन वेजिटेबल्स फ्रॉम सफल आप ले रहे हो तो आपका कुछ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रस्ट फैक्टर जरूर इन्वॉल्व होता है कि ठीक है सफल की सब्जी ले रहे हैं भाई, ठीक ही होगी. तो उस ट्रस्ट फैक्टर को मेंटेन करने के लिए ये रूल्स हैं. ओके, and they have to provide you with some information that helps maintain that trust factor also. Just give me 1 minute. Now, the main aim of the Legal Metrology Act 2009 is to establish and enforce the standards of weights and measures, regulate trade and commerce in weights, measures and other goods which are sold and distributed by weight. ना बोला गया उतना है या नहीं इसके अंदर, ठीक है.
According to the Act, the central government may appoint a director for legal metrology to perform duties related to interstate trade and commerce. The state government may appoint the controller of legal metrology to perform this interstate duties or commerce. तो काम बस इतना सा है कि जो भी पैकेजिंग आए वो स्टैंडर्डाइज्ड आए, हमें उस पर विश्वास रहे कि हाँ जितना कहा गया उतना है इसके अंदर. Okay. Next is green protection to Aravalli. So recently, the Supreme Court extended the green protection to the forest land in the Aravalli range. The court's ruling will mean around 30,000 hectares across Aravallis and Shivalaks in Haryana will be considered forest land. पीछे न्यूज आ रहा था हरियाणा के अंदर वन पुलिस ऑफिसर, सीनियर पुलिस ऑफिसर was killed while conducting a raid in the Aravalli range for illegal sand mining. तो ट्रक वाला ने कुचल के आगे निकल गया. बहुत देर से इसको लेके एक PIL पेंडिंग था और बहुत सारे केसेस पेंडिंग थे कि इसको बंद किया जाए और इसको एक ग्रीन प्रोटेक्शन दिया जाए फॉरेस्ट लैंड अरावली रेंज के अंदर जो भी है. तो अब उसके अंदर रूलिंग आया है. ठीक है. सो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ऑल द लैंड कवर्ड बाय स्पेशल ऑर्डर issued under section 4 of the Punjab Land Preservation Act in Haryana. तो ध्यान रखिए कि ये है पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट और चल रहा हरियाणा में. क्यों? हरियाणा लेट बना ना, पंजाब में से है. Will be treated as forests and be entitled to protection under 1980 Forest Conservation Act. Okay. Such land cover under section 4 can see no commercial activity or non-forest use without the consent of the central government. State government का यहाँ पे ध्यान नहीं रहेगा. अब पहले ये state government के अंदर था तो बहुत धांधलेबाजी होती थी, अब नहीं होगी. It also stated that land covered by special order issued under section 4 of PLPA have all the trappings of forest land within the meaning of section 2 of the Forest Act. तो कहने का मतलब ये forest ही है, clearly ये forest land है, तो इसको उसी तरह से maintain भी करना है. Court directed the state government to clear any non-forest activities from such land in 3 months and report compliance. कोई भी non-forest activity हो रही है, कोई mining, logging, etc., बिना permission के हटाओ उसको. ठीक है. So that's why it was important. अभी recently यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो हरियाणा ने इसी एरिया के अंदर largest some wildlife sanctuary or some conservation forest announce किया है that they will be creating it. And they have announced a budget for that also. Yeah. So just a moment. This was in news about last month only. Okay. I'll share it with you later. Here are the orders. So at the heart of the issue is the classification of land under section 4 of the colonial era Punjab Land Preservation Act, which remains in force since Haryana was the part of undivided Punjab. The section was used to demarcate certain areas that need not be protected from any sort of erosion. Okay. तो पास्ट ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर ये कहा था कि जो भी चल रहा है एक बार रुको, बाद में बताएंगे. The 2018 ruling deemed any construction on those classified lands as illegal and should therefore be demolished. हरियाणा का उस टाइम पे क्या रिस्पॉन्स था? The state said that 2018 order would mean 100% area of the 11 of the state's 22 districts, including Gurugram and Faridabad, will need to be raised. And therefore, in 2019, passed an amendment to the PLPA and excluded certain land meant for construction from the PLPA classification. This amendment was stayed by the Supreme Court bench a month later. So right now it is upheld. तो होगा क्या? It also rejected the state's contention that all 11 districts will need to be considered as forest, saying that in case of Gurugram, PLPA section 4 will apply only to 5.4% of the land. जितने में already urban development है, बाकी तो at least forest रहने दो. इस तरह से. So अभी ये section 4 particularly कहता क्या? देखिए. So section 4 of Punjab Land Preservation Act says that special orders under section 4 are the restrictive provisions issued by the state government to prevent deforestation from a specified area that could lead to soil erosion. So basically, deforestation रोकने के लिए था. Section 2 of the Forest Act imposes prohibition on dereservation of forest
कहने का मतलब फॉरेस्ट लैंड को कन्वर्ट नहीं कर सकते, और यूज ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस एक्ट में पहले से ही सेंटर और स्टेट दोनों के रोल बड़े क्लियरली डिफाइंड हैं। नाउ एज फार एज द अरावली रेंज इज कंसर्न्ड, नाउ इट स्ट्रेचेस for about a distance of 720 km from Himmatnagar in Gujarat to Delhi, spanning Haryana and Rajasthan. So the formation, that is one of the pre-Indian subcontinent, सबसे पुराने formations में से आता है. So they date back millions of years. Carbon dating के हिसाब से they date back to at least 5th century BC. Characteristics क्या है? Geography के अंदर आपने पढ़ रखा है. So the Aravallis of northwest India are one of the oldest fold mountains of the world. That's what they are known for. Now, from the residual mountain with an elevation of 300 meter to 900 meters, ज़्यादा लंबे ऊंचे नहीं है. Guru Shikhar Peak on Mount Abu is the highest. Okay, वहाँ पे ब्रह्म कुमारी ashram is also one of the famous ones. Then it has been formed primarily of folded crust when two convergent plates move towards each other by the process called orogenic movement. Orogenic means mountain forming. Okay. The mountains are divided into two main ranges, Sambar Sirohi range and Sambar Khetri range in Rajasthan, where their extension is about 560 kilometers. आज भी इन Aravallis में से ही आपको मार्बल और ये सब बढ़िया पत्थर मिल रहे हैं, पुराने हैं ना. The hidden limb of Aravalli that extends from Delhi to Haridwar creates a divide between the range, between the drainage of rivers Ganga and the Indus. So all these geographical facts Aravallis के बारे में NCERT based याद रखने हैं, क्योंकि अब प्रीलिम्स के एंगल से ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे. DLPA तो है ही है, why it is in news, and then this. दो तरह से क्वेश्चन इसमें से बनेंगे. ठीक है. सिग्निफिकेंस क्या है अरावलीज की, ये भी NCERT के एंगल से ही जरूरी है. So they act as a barrier between fertile plains in the east and the sandy desert in the west. They have checked the spread of Thar desert. तो desertification of Indo-Gangetic plains नहीं हो रही उतनी स्पीड पे, क्योंकि अरावली रेंज है बीच में. Rich biodiversity, impact on climate. So Aravallis have an impact upon the climate of northwest India and beyond. During monsoon, it provides a barrier to the monsoon clouds moving eastward towards Shimla and Nainital, thus helping nurture the sub-Himalayan rivers and feeding the North Indian plains. तो इन्हीं से डाइवर्ट होके हमारे यहाँ पे पंजाब प्लेन्स में बारिश हो रही है. In winter months, it protects the fertile alluvial river valleys from the cold westerly winds from Central Asia, western disturbances. So this is the situation. Next is Green Grids Initiative. So India and UK jointly announced a declaration of One Sun, One World, One Grid, OCOWOG. पहले तो इसकी करंट अफेयर्स के हिसाब से सिर्फ फुल फॉर्म याद रखनी. OSOWG or OSOWOG is recently seen in news means which of the following. तो इजी क्वेश्चन इसमें बनता है, और आते हैं इजी क्वेश्चन प्रीलिम्स में, आप खोल के देखो. सो दिस वाज क्रिएटेड, डिक्लेरेशन कब हुआ? COP26 ग्लासगो के अंदर लास्ट ईयर किया गया. नाउ GGI OSOWG was conceived in 2018 to develop global interconnected solar energy systems. Under ISA, India announced the launch of Green Grid Initiative. सबसे चल रहा है, that is One Sun, One World, One Grid, in partnership with UK. So 2018 से we are trying to work it out. Okay? The vision behind this is the sun never sets. जैसे ब्रिटिश किंगडम की एक लाइन होती थी, the sun never sets in the British Kingdom. तो उसी चीज को आगे भी बढ़ा रहे हैं. ठीक है. And is a constant at some geographical locations globally at any given point of time. The initiative aims to build a framework for a global cooperation on effective utilization of renewable resources. Basically 2030 तक टारगेट अचीव करना है, और जितनी कंट्रीज से टाई अप करेंगे उतना अच्छा है. एक तरह से डिप्लोमेसी के डिफरेंट चैनल्स खोलता है. ठीक है. This project aspires to harness the sun's energy and build a global interconnected electricity grid. तो वैसे तो ये अपने आप में कितना feasible है वो पता चलेगा. Stages of the grid. So interconnection of the Indian grid with the Middle East, South Asia and Southeast Asian nation grids. Then these grids interconnection with the African power grid, and finally the global interconnectivity.
So this is the way we are trying to achieve this 3-stage process. So that is how the international grid connection can be made. लेकिन इसका होगा क्या वो अभी पता चलेगा. We don't know. This is just a project. This is just a proposal, a vision. Okay, fine. Next. What is the importance of this global greening initiative behind the grid? So it will bring more technical, financial, and research cooperation, definitely. It will help create a depth of organization scale spanning national governments, international financial and technical organizations, legislators, power system operators, and knowledge leaders. तो क्लीन एनर्जी में जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबको इकट्ठा लेके आएगा. सबके पास टेक्नोलॉजी है तो शेयरिंग हो सकता है टेक्नोलॉजी का. इट विल रिड्यूस द प्रोजेक्ट कॉस्ट, हायर efficiencies, and increased asset utilization. It will result in economic benefit, positively impact poverty alleviation, and support in mitigating water, sanitation, food, and other socioeconomic challenges. We know that with electricity we can do a lot of things, and if there can be a situation like this which can be created, it's a very good vision. आगे जाके इसकी implementation कैसे होती है वो देखते हैं. Challenges क्या हैं? So documentation of GGI does not comment on improving the efficiency of existing solar energy infrastructure in the country. Okay. Solar energy technologies such as batteries and panels use energy intensive raw material and several chemicals and heavy metals. उनको भी ठीक से handle करना जरूरी है. It does not define strategies to recycle or repurpose existing infrastructure, क्योंकि solar panel का जो लाइफ स्पैन है वो 25 साल का है. अभी हमने नए नए लगा रहे हैं, जब इनकी रिसाइकलिंग आएगी तब देखेंगे क्या होता है. Then opportunities. Being a thermal energy dependent country, India faces severe electricity shortages in many areas due to heat waves and coal shortages. तो इसलिए इस तरह का अगर सेटअप बन जाए कि हमें बाहर की कंट्री से बिजली मिल रही है और टेंशन फ्री होकर हम ले सकें तो बहुत अच्छा है इंडिया के लिए. So solar energy has been improving lives of millions of people in rural India. Definitely लोगों ने अपने घरों में सोलर पैनल्स लगवाए हैं और वो सुख में हैं. बिजली के बिल कम आते हैं. अगर इसको ऑन ग्रिड करा लेते हैं तो और भी सस्ता पड़ता है. एक ऑफ ग्रिड होते हैं सोलर पैनल्स, एक ऑन ग्रिड होता है. ऑफ ग्रिड में वो बस स्विच कर सकते हैं या जब जरूरत पड़े. ऑन ग्रिड में वो नेट कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग. प्रीलिम्स में इतना की चाहिए. मेंस के अंदर सजेशन सबकी बेसिक्स वही होती हैं. सो एनवायरमेंटल कॉस्ट ऑफ सोलर पावर, एफिशिएंसी इश्यूज, एनर्जी लॉसेस ड्यू टू कन्वर्जन एंड ट्रांसफर, and the problem of waste management are the barriers that need to be addressed urgently by the implementing bodies. Institution building is key to fulfilling ambitions of multi-country grid project. कि हम ये responsibility किसको दे रहे हैं? हर country में एक parallel institutions create करने की जरूरत है. ठीक है. In this context, ISA can act as an independent supranational institution. अगर हम इसका office हर country में खोल दिया जाए तो that can really work good for this part. Next is approved fuels for NCR. Let's see. Commission for Air Quality Management has directed that the NCR states to adopt a standard list of approved fuels to reduce air pollution. कौन से हैं जी? पेट्रोल, डीजल, हाइड्रोजन, मीथेन, नेचुरल गैस, LPG एंड इलेक्ट्रिसिटी. बस. तो इनका नाम पहले तो याद रखना है कि एज पर CAQM कौन से अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ फ्यूल्स हैं. बेसिकली इसमें मिसिंग क्या है? इसमें केरोसिन ऑयल मिसिंग है ना. और क्या मिसिंग है? वुड मिसिंग है मे बी. सो दैट्स मिसिंग. अदरवाइज तो जो नॉर्मल फ्यूल्स यूज हो रहे हैं सब वही. Now many industries shifted to cleaner fuels such as piped natural gas and biomass, and many other industrial sectors such as food processing, distilleries, etc. are already shifting to it. So this is a requirement ताकि as it is local pollution load कम हो जाए. कोल वगैरह नहीं यूज करना for example. So what is the CAQM? This is a statutory body formed under the Commission for Air Quality Management in the National Capital Region and Adjoining Areas Act 2021. नया बॉडी है, 2021 में बना था. इसको लेके प्रीलिम्स में सीधा क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है. So this Commission for Air Quality Management in NCR and adjoining areas also dissolved the Environmental Pollution Prevention and Control Authority EPCA, जो पुराना 1998 में NCR में काम कर रहा था, वो खत्म हो गए. उसकी जगह पे ये CAQM काम करेगा. ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या करना चाहता है? बेटर कोऑर्डिनेशन, रिसर्च, आइडेंटिफिकेशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स
surrounding the air quality index and for the matters connected therewith. Last टाइम पे हमने ये देखा था कि आजकल लंग्स बच्चों में भी ब्लैक आनी शुरू हो गई हैं बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन एंड इट्स एन इरिवर्सिबल डैमेज. यू कैन ओनली regulate the exposure. There is no other solution for you also. And therefore these kind of initiatives are very important. CAQM और ये ठीक तरह से enforce भी कर पाए अपने काम को तो बहुत अच्छा है. Next is the tropical ozone layer. So according to new study, a new ozone hole has been detected over the tropics at the latitude 30 degree south and 30 degree north. पहले तो अंटार्कटिका के अंदर ही था, ठीक है. अभी हमें उससे बड़े बड़े होल मिल रहे हैं. ट्रॉपिकल होल इज अबाउट 7 times larger than Antarctica. Okay, then which makes up 50% of the Earth's surface and causes a global concern due to risk associated with it. अब ओजोन होल नहीं है तो यूवी रेज का ट्रबल आएगा, ठीक है. तो हमारे यहाँ पे भी अब स्किन के कैंसर, कैटरैक्ट्स एंड ऑल दी अदर नेगेटिव इफेक्ट्स विल कीप ऑन, क्योंकि हम भी तो इसी जोन में. देन India's regulation for safe use of hydrocarbons as non-ODS alternatives. ODS मतलब ozone depleting substances. So hydrocarbons, including isobutane, cyclopentane, are available as non-ODS alternatives for use in aerosols, foam blowing and refrigeration sector. जो पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स थे उसकी जगह पे हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं या हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है. Next, safe use of hydrocarbon is regulated by the petroleum laws in India. ये ध्यान रखना है. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हिसाब से ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस यूज नहीं होने चाहिए. दैट इज वन पार्ट. रेफ्रिजरेंट्स में हमने चेंज कर दिया, लेकिन इंडिया में कौन सा पर्टिकुलर लॉ है जो इसको इंप्लीमेंट कर रहा है? तो दैट इज द पेट्रोलियम लॉस. पेट्रोलियम एक्ट 1934 एंड पेट्रोलियम रूल्स 1976. ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए है. गैस सिलेंडर रूल्स 1981, ये किसी भी तरह के सिलेंडर्स और उसमें कैसे फिलिंग होना है इन सब चीजों के लिए. Now, which one of the following is associated with the issue of control and phasing out of use of ozone depleting substances? So there is Montreal Protocol. पुराना क्वेश्चन है 2015 का. Next is Australia killing millions of its bees. हमेशा honey bees are something that are we are concerned about, but these are not the bees that we are talking about in this particular current affair. So here, what kind of bees are being killed? So Australian authorities have killed millions of honeybees over the past 2 weeks in the effort to stop a potentially catastrophic parasite plague named as varroa mite. Now let's see. The decision to kill honeybees could adversely impact the growth of several crops, including almonds, macadamia nuts, blueberries that are dependent upon hives for pollination. Now bees are some of the most important pollinators, और अगर इनको मारेंगे तो गड़बड़ होगा पॉलिनेशन में, लेकिन मारना पड़ रहा है. क्यों? दिस इज द पैरासाइट. सो वरोआ माइट, अभी ना सीधा सा यूपीएससी क्वेश्चन क्या बनाएगा? वरोआ माइट रिसेंटली सीन इन न्यूज़ व्हिच आर द फॉलोइंग. सो इट इज अ पैरासिटिक इंसेक्ट. इतना सा इसका आंसर होगा. क्या करता है? इट इन्फेक्ट्स एंड फीड्स ऑन हनी बीज. ओके, एंड द स्मॉल पेस्ट which are reddish brown in color have been capable of eradicating the entire colonies of honeybees. तो जहां पे इसको पाया जा रहा है वो किल कर रहे हैं इसको. Although these can feed on live adult honeybees, they primarily feed on the reproduce on larva and pupae in developing brood, causing malformation and weakening as well as virus transmission. आपको प्रीलिम्स में मेजरली याद क्या रखना है? Varroa mite, it's a parasitic insect and it is affecting honeybees. इसलिए ऑस्ट्रेलिया में इनको मार, बस ऑस्ट्रेलिया में मार रहे हैं. आपको पेपर में नहीं पूछेंगे, वो Varroa mite के बारे में पूछ सकते हैं. नेक्स्ट इज प्लास्टिक वेस्ट मिनिमाइजेशन. सो नीति आयोग हमारा थिंक टैंक, उसने एक रिपोर्ट दिया है, ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज टू प्लास्टिक्स एंड देयर एप्लीकेशन. पहले तो यही याद रखना कौन सा रिपोर्ट किसने दिया. नाउ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज also banned the single-use plastic. Violation of the ban will invite penalty or punitive action under Section 15 of the Environmental Protection Act. Then, ये basics हैं means के लिए. environmental impact क्या होता है? What are the findings of this report? So global plastic production and disposal. हमने static में भी इसको पढ़ा है.
लेकिन यहाँ पे इस रिपोर्ट के हिसाब से क्या बोलते हैं देखिए, बिटवीन 1950 टू 2015, तो कहने का मतलब हमारे आज़ादी का अगर ज़्यादातर पीरियड देख लिया जाए, cumulative production of polymers, synthetic fibers and additives was about 8,300 million tons, of which 55% went straight to landfills or were discarded, 8% incinerated, and only 6% was recycled. तो हम जब से इंडस्ट्री चल रही है तब से 6% ही रिसाइकलिंग हुई है. But 2050, by 2050, if the production is continued at the same rate, it would generate another 12,000 metric ton. इंडिया's केस कैसा है, ये ग्लोबल था, हमारा कैसा देखिए. इंडिया प्रोड्यूस 3.47 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट पर एनम, तो 3.5 लगा के चलते, with per capita waste growing from 700 grams to 2,500 grams over the last 5 years. ये कैसे हो गया? अभी पहले आप इतने छोले भटूरे खाने नहीं जाते थे, मोमोज खाने नहीं जाते थे, तो हर बार अब जब आप ऐसा कुछ भी खाने जाते हो तो उसके साथ प्लास्टिक पैकेजिंग आती है या कुछ ना कुछ सिंगल यूज प्लास्टिक होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट हैज इंक्रीज्ड. Goa, Delhi, urbanization really affects it. Goa, Delhi and Kerala, they have the highest per capita plastic waste generation. क्यों? Tourism. Nagaland, Sikkim and Tripura have the lowest. क्यों? Ecotourism. है दोनों जगह पे टूरिज्म, लेकिन ये है कि किस तरह का टूरिज्म है. ठीक है. Concerns. Globally, 97 to 99% of these plastics are derived from fossil fuel feedstock, while remaining 1 to 3% from bio-plant-based plastics. Only a small amount of this plastics waste gets recycled. India collects only 60% of its plastic waste, and the rest 40% remains uncollected. इस 60% में से भी ऐसा नहीं है कि सारा रिसाइकल हो जाता है, बहुत कम रिसाइकल हो पाता है. हमारे पास रिसाइकलिंग कैपेबिलिटी ही बहुत कम है. So, what are the recommendations? First, so the most preferred option is waste minimization. Second is extended producer responsibility, जो हमने पढ़ लिया. तो ये दो काम है. इसके बाद बायोडिग्रेडेबल या कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स हैं, वो डेवलप किए जा सकते हैं. नाउ व्हाट कैन बी द ऑल्टरनेटिव्स टू प्लास्टिक्स? वी गॉट ग्लास, वी गॉट बगसे मेड प्लास्टिक प्लेट्स या बगसे मेड प्लास्टिक प्लेट्स, डिस्पोजेबल प्लेट्स, दे आर ऑलरेडी इन द मार्केट. बायोप्लास्टिक्स, सो दैट इज प्लांट बेस्ड, जिससे कॉर्न से बन रहे हैं फॉर एग्जांपल. देन नेचुरल टेक्सटाइल्स, सो लाइक कॉटन, वूल, लिनन, हेम्प, इनको यूज कर सकते हैं. Refill, reuse and buy unpackaged, that is another way for you to reduce plastic waste. Then ये means में काम आए. आमतौर पे आपको जो प्रीलिम्स के लिए इंफॉर्मेशन है वो फैक्चुअल वाला याद रखें. Now, sustainable use of wild species, IPBES report. तो पहले तो यही देख लीजिए, Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. This is the IPBES. इसकी एक रिपोर्ट है, that is sustainable use of wild species. So what is it? Let's see. Delegates from about 140 countries came together to discuss and reach an outcome on the sustainable use of wildlife, such as fishing, gathering, logging, terrestrial, animal harvesting. इन तरह की 5 कैटेगरीज इन्होंने वर्कआउट की, जिसके तहत हम वाइल्ड को यूज कर रहे हैं. Now the report is first of its kind and has been conceived after a period of 4 years of discussion. So it's an independent intergovernmental body. पहले तो IPBES का नेचर पता होना चाहिए. सीधा क्वेश्चन एक यही बनता है, करना क्या चाहते हैं? It strengthens the science policy interface for biodiversity and ecosystem services. तो गवर्नमेंट पॉलिसी को डायरेक्ट करने के लिए बनाई गई है. फाइंडिंग्स क्या है? Dependent upon wild species. So about 70% of world's poor population is directly dependent upon wild species. 20% source their food from wild plants, algae and fungi. Then wild species important source of income बहुत लोगों के लिए है, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो गरीब देशों में रहते हैं. Then local variations. So 34% of marine wild fish stock are overfished and 66% are fished within biologically sustainable levels. Then unsustainable logging of tree species. So there are about 12% of wild tree species which are threatened by unsustainable logging. हो सकता है वो particular species ही grow करना बंद हो जाए. Then rural people are at risk of unsustainable use because they are directly dependent on this wildlife and
wild biodiversity for their food, for their economic workout, everything. Cultural significance leading to exploitation. So certain species have cultural importance as they offer multiple benefits and define tangible and intangible features of people's cultural heritage. Use of wild species is also a source of culturally meaningful employment for such communities. जैसे कि wild rice is a cultural keystone species providing physical, spiritual, and cultural sustenance for many indigenous people in Great Lake region of North America. Why North America? इंडिया की बात करते हैं. इंडिया में there is a particular state which is called rice bowl of the country. कौन सा स्टेट है? मैसेज करके बताइए. Which state is called as rice bowl of India? Anybody? छत्तीसगढ़ को राइस बाउल ऑफ इंडिया बोलते हैं. कृष्णा गोदावरी डेल्टा रीजन जो है उसको राइस बाउल ऑफ इंडिया बोलते हैं. और क्यों बोलते हैं उसका कारण ये नहीं है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा राइस की पैदावार होती है, इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा वैरायटी ऑफ राइस अवेलेबल है. ठीक है. ऐसे ही राइस बाउल ऑफ वर्ल्ड कौन सा है? एनीबडी? साउथ ईस्ट एशिया को राइस बाउल ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं. यहाँ पे भी इसमें इसलिए बोलते हैं कि राइस का ट्रेड यहाँ पे सबसे ज्यादा है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड दैट वे. तो छत्तीसगढ़ को राइस बाउल ऑफ इंडिया बोलते हैं. कारण उसका क्या है? बिकॉज छत्तीसगढ़ हैज द लार्जेस्ट वैरायटी ऑफ राइस. साउथ ईस्ट एशिया को राइस बाउल ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं बिकॉज सबसे ज्यादा राइस के अंदर ट्रेड यहाँ पे होता है. ठीक है, फाइन. नाउ ड्राइवर्स एंड थ्रेट्स. So drivers such as land and seascape changes, climate change, pollution, invasive alien species, all these are threat. Illegal trade is always a threat to biodiversity. So कौन कौन से वाइल्ड स्पीशीज हैं, क्या प्रैक्टिसेस, क्या यूजेस हैं, तो आपको अगर मीन्स में भी बनाना पड़ जाए तो आप बना सकते हो, एक्सेप्ट फॉर दी एनिमल फिगरीन्स और ह्यूमन फिगरीन्स. रिकमेंडेशन क्या है? ये मीन्स के लिए चाहिए. Integration of diverse value systems, equitable distribution of cost and benefits, changes in cultural norms and social values. जैसे कि झूम कल्टीवेशन है फॉर एग्जांपल, इंडिया में प्रैक्टिस होती है असम के अंदर, तो उसकी वजह से फॉरेस्ट लाइफ डिस्ट्रक्शन होता है, कल्चरल डिस्ट्रक्शन भी होता है. तो उसकी जगह पे वो कुछ और तरीके से कल्चरल और सोशल नॉर्म्स को चेंज करने की जरूरत है. देन addressing the causes of unsustainable use and wherever possible reverse these trends will result in better outcomes for wild species and people who depend upon them. Bringing scientists and indigenous people together, जिनको अकल है और जिनको काम करना है, इन दोनों को इकट्ठे करने की हमेशा जरूरत होती है. In fishing, fixing current inefficiencies, reducing illegal, unreported and unregulated fishing. ऐसे harpoon fishing, it has to be regulated. It is illegal. In logging, this would entail management and certification of forest for multiple uses. So अलग अलग जगह पे अलग अलग काम करने की जरूरत है. Next is Rajasthan's Mennar bird village to become a wetland. So एक नया wetland जुड़ रहा है. तो that's that. अब इसमें मिन्नार उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, बस इतना से याद रखना आपने, बाकी सब तो आपने पढ़ रखा है. रामसर साइट का इसको भी दर्जा मिल जाएगा. The two lakes in the Mennar village, the Brahma and Dhand lake, host to a large number of migratory birds every year, and that's why it is a bird site, and that's why it will become a Ramsar site also. With the status of wetland, the two lakes will be strengthened for increasing the vegetation of aquatic plants and protecting the biodiversity. Greater flamingo, then white-tailed lapwing, pelican, marsh harrier, bar-headed goose, common teal, अलग अलग तरह के प्राणी हैं, जीव जंतु, बर्ड्स जो यहाँ पे पाए जाते हैं. तो एक बार इनकी रीडिंग लेनी है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी. फ्लैमिंगो और लैपविग और पेलिकन, ये 2-3 याद रखना. ठीक है. बाकी राजस्थान में 2 और वेटलैंड्स हैं, कालदेव घाना इन भरतपुर एंड सांबर सॉल्ट लेक इन जयपुर. ठीक है, जयपुर डिस्ट्रिक्ट. फाइन. देन कॉमनवेल्थ अडॉप्ट्स लिविंग लैंड्स चार्टर. ये क्या है? देखिए, लिविंग लैंड के अंदर होगा क्या? So it's a non-binding living lands charter which mandates that member countries will safeguard global land resources and arrest land degradation
while acting against climate change, biodiversity loss and towards sustainable management. So basically land degradation के साथ related है, उसको conserve करने के लिए. Living land अपने आप में इसी चीज को signify करता है, ठीक है. So this was announced at the conclusion of 2022 Commonwealth Heads of Government meeting in Kigali, Rwanda. तो ये मीटिंग भी अपने आप में एक क्वेश्चन है, ठीक है. Okay. Now, the charter aims to achieve the climate goal through a mixture of policy influence, financing, technical assistance, governance, share knowledge across the nations, aims to support member countries to effectively deliver the commitments under 3 Rio Conventions: UN Convention of Biological Diversity, combat desertification and climate change. तो लिविंग लैंड इनिशिएटिव के अंदर ये 3 कन्वेंशंस को वर्कआउट करने की कोशिश की जा रही है. ये अपने आप में एक क्वेश्चन है प्रीलिम्स में, ठीक है. ओके, देन इसके अलावा क्या हाइलाइट्स रहे किगाली समिट के, देखिए. सो इट्स अ बायएनुअल समिट व्हिच कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स आर डूइंग. इट टुक प्लेस इन रवांडा विद द थीम, अब ये थीम याद रखना है, डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर, कनेक्टिंग, इनोवेटिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग. ओके. It has raised more than $4 billion in pledges for battle against malaria and other tropical diseases. That's that. इतना याद रखना. Recently, ये next current affair है nature-based solution. National Institute of Urban Affairs, Climate Center for Cities, World Resource Institute India, and their partners have launched India's first national coalition or platform for urban nature-based solutions. करना क्या चाहते हैं? At the 11th World Urban Forum in Poland. So NIUA focuses on research, knowledge management, policy, advocacy, capacity building on urban development and management to address and develop sustainable, inclusive, productive urban ecosystems in the country. ये जो adjectives हैं ये means के लिए याद रखना है. Sustainable, inclusive, productive. तो स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर ना एक चीज जो वर्कआउट की जा रही थी वो इंक्लूसिव की थी. अब क्या नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस हैं, पहला देखते हैं. रेस्टोरेशन, सो इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन, इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग एंड फॉरेस्ट लैंडस्केप रेस्टोरेशन. जितना हो सके चीजों को वापस उनकी स्थिति तक पहुंचाना. इश्यू स्पेसिफिक, so ecosystem based adaptation, mitigation, climate adaptation and disaster risk reduction. Infrastructure, so natural and green infrastructure management, ICZM, integrated coastal zone management and water resource management and area based conservation. तो अलग अलग डायमेंशंस पे ये काम करता है, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस देता है. ओके, ओवरऑल अचीवमेंट क्या करना रहता है? टू हेल्प स्केल अर्बन नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस थ्रू डिफाइनिंग अ शेयर्ड लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन ऑफ बेनिफिट्स, ड्राइविंग इन्वेस्टमेंट्स, मीन स्ट्रीमिंग अर्बन इकोसिस्टम बेस्ड सर्विसेज. पेपर में क्या आएगा? तो नेचर बेस्ड सॉल्यूशन और एनबीएस रिसेंटली सीन इन न्यूज़ फॉर विच पर्पस. ठीक है, तो वहां पे करना क्या चाहते हैं? हेल्प स्केल अर्बन नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस थ्रू दीज 3 थिंग्स. बस इतना क्या याद रखना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी. ओके, नेक्स्ट. ये बहुत लंबा चौड़ा है, इसको ज्यादा वर्कआउट नहीं करने की जरूरत, बिकॉज इट्स लाइक अ रिमोट ऑर्गेनाइजेशन मेकिंग रिमोट थिंग्स. ओके, और ज्यादातर इनमें से चीजें आपने अपने क्लासरूम में पढ़ रखी हैं. Then Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, CDRI. ये important है. Now the UN approved categorizing this coalition as an international organization. So Union Cabinet that has approved it कि हम इसको मानेंगे कि ये international organization है. It has also approved signing of the headquarters agreement, further granting it exemptions, immunities and privileges contemplated by the UN Privileges and Immunities Act 1947. Which means that the members' property assets wherever located and whomsoever held shall enjoy immunity from every form of legal process except in particular case it has expressly waived its immunity. इस तरह की कैटेगराइजेशन का क्या मतलब होता है? ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनेशनल स्टेटस देने का कंसर्न है और उसमें फिर लोकल लॉज के मुताबिक वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलती. उनके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस वगैरह उस तरह से नहीं डील होंगे. थोड़ा सा उनको एक बेटर ट्रीटमेंट मिलेगा. जैसे वियना कन्वेंशन के अंदर एम्बेसडर्स को ट्रीटमेंट अच्छा मिलता है, वैसे ही. सो फर्स्ट ऑफ एक्सपर्ट कंसल्टेशंस.
So it would help in delegating experts to other countries. So इससे बेनिफिट क्या मिलेगा कि हमारे से इंडिया से किसी को बाहर भेजना है या बाहर से किसी को इंडिया में लेके आना है तो आसान रहता है. It will make technical expertise available to assist countries in developing resilient infrastructure in accordance with their disaster and climate risk resources. Then it will provide assistance to countries in developing appropriate risk governance arrangements, enhanced funding and cooperation, क्योंकि international organization है तो इधर उधर से funding मिल जाएगा. So it will provide all possible assistance to member countries in accordance with the Sustainable Development Goals, Paris Climate Agreement, Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. तो उन सबके हिसाब से चल सकता है. अब ये CDRI है क्या? It's a global partnership of national governments, UN agencies and programs, multilateral development banks like World Bank, Asian Development Bank, and so on. The private sector, academic and research institutions. सबका मिला जुला अवतार है. क्या करना चाहता है? Increase the resilience of infrastructure system to climate and disaster risk, thereby ensuring sustainable development. 2019 में लॉन्च किया गया था at par with the UN Climate Action Summit in New York. It is the Government of India's second major global initiative after the International Solar Alliance. तो हम ही ने शुरुआत की है. Demonstrate India's leadership capabilities in climate change and disaster resilience issues. तो CDRI अगर ठीक से काम करेगा तो हमारी कंट्री से एक्सपर्ट्स कहीं पे भी जाके काम कर सकते हैं. Since its inception, 31 countries, 6 international organizations and 2 private sector organizations have joined CDRI as a member. तो इसके क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं ज्वाइन करने के, वो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. ये याद रखना है कि CDRI के अंदर 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी, ठीक है? ADB, वर्ल्ड बैंक, UNDP, then UN Office for Disaster Risk Reduction, European Union, European Investment Bank. तो ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इससे CDRI का और भी महत्व बढ़ जाता है, ठीक है? Then Forest Conservation Rules 2022. So Ministry of Environment, Forest and Climate Change have issued these rules. Now it is conferred by Section 4 of the Forest Conservation Act 1980 and in suppression of the Rules 2003. तो पुराने को अभी ये रिप्लेस कर रहे हैं. क्या करेंगे इसके अंदर? पहली बार कमिटीज बनाई जाएंगी. सो एडवाइजरी कमिटी, ए रीजनल एम्पावर्ड कमिटी एंड अ स्क्रीनिंग कमिटी, अलग अलग लेवल पे. एडवाइजरी कमिटी सेंटर में होगी, रीजनली एम्पावर्ड कमिटी स्टेट लेवल पे रहेगी और स्क्रीनिंग कमिटी भी स्टेट और यूटी लेवल पे रहेंगी. क्या करेगी एडवाइजरी कमिटी? ये सेंट्रल लेवल पे एक एडवाइज क्या करेगा कि फॉरेस्ट को कैसे रेगुलेट करना है. प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमिटी, कोई भी प्रोजेक्ट किसी भी फॉरेस्ट के अंदर लगना है तो उसका स्क्रीनिंग करेगा कि इन्वायरमेंट के हिसाब से ठीक है, ठीक है. देन रीजनली एम्पावर्ड कमिटीज लीनियर प्रोजेक्ट्स के लिए रहेगी. सो ऑल लीनियर प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग फॉरेस्ट लैंड अप टू 40 हेक्टेयर्स एंड दोज हैविंग projected a use of forest land canopy density up to 0.7 shall be examined by the integrated regional office and compensatory afforestation. Essentially काम्पा हमारे पास एक पुरानी स्कीम है compensatory afforestation के ऊपर, लेकिन अब उसको implement इसके थ्रू बेटर किया जाएगा. So the applicants for diverting forest land in hilly or mountainous states with green cover covering more than 2/3 of its geographical area, or in state or UTs with forest cover more than 1/3 of its geographical area, will be able to take up compensatory afforestation in other states where it is less than 20%. तो है क्या ना कि अगर लेट्स से आप अरुणाचल में, महाराष्ट्र में, MP में जाके पेड़ काट रहे हो जहाँ पे अच्छे खासे ऑलरेडी फॉरेस्ट एरियाज हैं, तो वहां पे फॉरेस्टेशन करने की बजाय पंजाब हरियाणा में आके आप फॉरेस्टेशन करोगे जहाँ पे फॉरेस्ट कवर कम है. Then what are the other initiatives for forest conservation? तो ये एक स्टैटिक का पार्ट है. इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी है 1952. Then there is Forest Conservation Act 1980, National Forest Policy 1988. तो इनको एक बार यहाँ पे आप स्टैटिक पोर्शन अगर चाहो तो रीडिंग दे सकते हो. नेक्स्ट इज ट्री श्रू स्पॉटेड इन J&K. ये क्या है भाई, देखते हैं. So recently scientists have spotted the fossils of a small mammal resembling squirrel called tree shrew known as Sevatupia. Very difficult names, biological names. Aramnagrenis. Okay.
That's the most I will try to pronounce it. Now, belonging to a new genus and species from Jammu and Kashmir. अभी बस इसमें prelims में क्या question आएगा? Tree shrew recently seen in news is which of the following? So it is a squirrel. Okay, fossil है squirrel के. That's it. Okay, ज़्यादा attention इसकी लेनी नहीं. So tree shrews were very rare elements of fossil record, with only few species known throughout the entire Cenozoic era. Okay, they are the oldest record of fossil tupids in the Shivaliks. Tupids क्या होते हैं? There are several species of East Indian and Asiatic insectivores of the family Tupidae. Okay, that's that. बस ज़्यादा attention नहीं लेनी. Tree shrew, fossil, squirrel. 3 शब्द. India's largest floating solar power project. So where is it coming up? That's the only question that you need to deal with. So it's 100 megawatt Ramagundam floating solar power project. So किधर है? तेलंगाना के अंदर. बस. That's that. Floating solar panels हैं. आगे चलिए. Water security in Asia. So recent findings by the scientists of the Southeast Asian countries show that urban water security in Asian cities, including Delhi, is on a decline. हमें मालूम है. Internationally इन चीजों के ऊपर क्यों स्टडी हो रही है पता नहीं. Okay. The global mega cities like Tokyo, Shanghai, Delhi are the symbols of rise of the new Asian century. But अब इसमें पानी नहीं होगा तो लोग कहाँ जाएंगे? Cities को छोड़ना पड़ेगा. Issues क्या है? Amount of fresh water. So in Asia there is half as much fresh water as there is globally. Low water efficiency is the major thing. हम खराब ज़्यादा कर रहे हैं पानी को. Urban pollution, water problems are common in big cities. बहुत ज़्यादा. अब जैसे दिल्ली में तो कई बार वेस्ट को सीधा ग्राउंड वाटर में पंप कर देते. Climate change, so which is leading to droughts and floods. Examples: over exploitation in Bangkok, Thailand has severely reduced groundwater levels, causing land to subside even. Hanoi, Vietnam is one of the fastest growing cities in terms of GDP growth, contributing to more than 19% of the country's total GDP. But pollution. Madaba in Jordan is a water scarce city. बहुत सारे ऐसे आपको विलेजेस मिल जाएंगे ऑलरेडी डिजर्टिफिकेशन की वजह से वहां से लोग जा चुके हैं राजस्थान के अंदर. वैसी ही डिजर्टिफिकेशन अब बिग सिटीज में भी देखने को मिलेगी धीरे धीरे. Now, what are the suggestions? First is policy intervention. So we need to have integrated urban water security assessment frameworks, long-term vision mapping. We need to leverage technology. For example, Thailand's Asian Institute of Technology has developed WhatsApp. This is a web-based water security assessment tool that can evaluate where the cities stand by measuring 5 distinct aspects of urban water security. That is supply, sanitation, productivity, environment, and governance. Local solutions. The cities that embrace new ways to manage water can improve the livelihood of their population and support continued growth. जैसे कि Bangkok Vision 2032. Then Jordan's Water Action Plan, that's also a local solution. ये मेंस में आंसर राइटिंग में बहुत काम आएंगे सारे एग्जांपल्स लिखने के लिए, क्योंकि ये आपके आंसर को दूसरों के आंसर से ऊपर उठा देंगे. ठीक है. Then planning and implementation. Essentially, there is an urgent need to plan to stop water supply losses due to leaking pipes and all. जो चीजें जल्दी आसानी से की जा सकती हैं वो तो करें. Enhancing financial sustainability through water tariffs. फ्री में पानी देना बंद किया जाए. Strategy also entails allocating water to repair important ecosystems like forest, marshes, rivers for improved conservation. That's that. Next is UN Ocean Conference 2022. जब भी ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस न्यूज में है पहले तो ये पता करो हुआ कहाँ. So this was hosted by Kenya and Portugal government. Okay. And Minister of Earth Sciences led the Indian delegation हमारी तरफ से. The UN Ocean Conference 2022 is aligned with the SDG 14, that is life below water, and stress on critical need of scientific knowledge for the marine technology to build ocean resilience. As far as climate change is concerned, basics यहाँ पे हैं. Climate change की वजह से क्या-क्या troubles आएंगे. What are the key agendas of the conference? First is moratorium on deep sea mining. हमने पहले भी पढ़ा था deep sea mining के अपने नुकसान हैं. Then carbon sequestration,
Blue Deal, so this was promoted to enable sustainable use of ocean resources for economic growth, क्योंकि blue revolution की इंडिया में भी जैसे बात हो रही है. High seas are unregulated, for example fishing, so that needs to be regulated on high seas. ये पहले भी इसको लेके हम बात कर चुके. UN Convention of Law of Seas के अंदर भी हम इसको वर्कआउट करना चाहते हैं. Threat to ocean, so global warming, pollution, acidification, marine heat waves, ये सारे नए नए threats हैं जो आ रहे हैं. Now what are the initiatives as of now? Decade of Ocean Science for Sustainable Development. So the UN has proclaimed 2021 to 2030, that is the ongoing decade for this particular purpose. Okay, what we want to do, reverse the cycle of decline in ocean health and gather ocean stakeholders worldwide. Then there is a World Ocean Day, 8th June. That's what we are celebrating. ये भी UN ने declare किया है. Marine protected areas. So ये भी UN based हम क्रिएट करना चाहते हैं अलग अलग जगह पे जहाँ पे नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करने की जरूरत है. ग्लो लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, सो दिस इज बिटवीन IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, एंड FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द UN. So along with Norway government, aim to prevent and reduce marine plastic litter from ships and shipping and fisheries. Then India Norway Ocean Dialogue, नॉर्वे इसको लेके बहुत सेंसिटिव है इन चीजों को. So Indian and Norwegian government are work more closely on oceans by signing MOUs. So that is the India-Norway Ocean Dialogue. And then India's Deep Ocean Mission for Blue Economy Initiative. अभी चाइना का दबदबा है पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स की एक्सट्रैक्शन में, हमने पढ़ा था, और इंडिया इसमें वर्कआउट करना चाहता है. खासतौर पे ये सारी जो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स की माइनिंग हो रही है वो इंडियन ओशन में हो रही है, तो इंडिया को डेफिनेटली वहां पे एक लीडरशिप पोजीशन लेने की जरूरत है. अभी सिर्फ टेक्नोलॉजी डेफिसिट की वजह से, इन्वेस्टमेंट डेफिसिट की वजह से हम रुके हुए. देन इंडियाज इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, सो इट्स एन ओपन नॉन ट्रीटी बेस्ड इनिशिएटिव. करना क्या चाहते हैं, कोऑपरेटिव कोलैबोरेटिव सॉल्यूशंस फॉर कॉमन चैलेंजेस इन द रीजन. कॉमन चैलेंजेस चाइना के साथ रिलेटेड ही हैं यहाँ पे, तो ये एक तरह से एनवायरमेंटल एंगल से मिलिट्री की बजाय हम यहाँ पे इंटरवेंशन कर रहे हैं. ओके, so that's that. Next is Renewables 2022 Global Status Report. So this particular report, जब भी ऐसी कोई आती है, जैसे मैंने पहले कहा, कौन रिलीज करता है वो चाहिए, और फिर मेंस में इसको साइट करने के लिए आपको वर्कआउट चाहिए. ठीक है, क्या हाइलाइट्स हैं, लेट्स सी. So this report sends a clear warning that global clean energy transition is not happening. हमने पहले भी इसके ऊपर वर्कआउट किया कि जितना कह रहे हैं उतना हो नहीं पा रहा है. इंडिया की अभी परफॉर्मेंस क्या है? So India ranked third in the renewable energy installations in 2021 after China and Russia. Present data India का आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये means के लिए useful है कि solar PV capacity कितना है, hydro power capacity कितना है, total installation कैसा है, बस that kind of data is what it is useful for. Okay. Now here onward, Kibul Lamjao National Park, यहाँ से हम next class में करेंगे. आज के लिए इतना काफी है. And in the next class, we'll be able to finish this, and that will be the last class of this environment and biodiversity current affairs. So thank you so much. If you have any doubts, please do ask.